Hello children, welcome to my channel Study Time and I am Gurmeet Kaur. Today we are going to discuss question answers from the chapter Pride and Prejudice from the book New Images. It's chapter 10, class 8. So let's begin. Okay, let's go to question number 1. Here, sequence these events based on the order in which they take place in the story and number them from 1 to 5 with 1 being the earliest event. तो आप 1 to 5 आपको उनको number करना है. I have given the answer straight away. The first one is Caroline Bingley invites Jane to her house. तो Caroline Bingley जो है invite करती है Jane को अपने घर पे. Mrs. Bennet asks Jane to ride to Netherfield on horseback इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ कोच. और मिसेस बेनेट जेन को कहती है कि वो हॉर्स बैक पे जाए टू द नेदरफील्ड इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ कोच. जेन फॉल्स इल, जेन बीमार हो जाती है क्योंकि वो बारिश में भीग जाती है. एलिजाबेथ वॉक्स टू नीदरफील्ड, एलिजाबेथ नीदरफील्ड जाती है अपनी बहन के पास क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वो बीमार है और वो वापस नहीं आती है. कैरोलिन बिंगले, मिस्टर बिंगले एंड मिस्टर डार्सी डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ एन अकम्पलिश्ड वुमेन. जो कैरोलिन बिंगले है, मिस्टर बिंगले है एंड मिस्टर डार्सी जो है वो क्या करते हैं, डिस्कस द क्वालिटीज ऑफ अकम्पलिश्ड वुमेन. अकम्पलिश्ड मीन्स हाईली स्किल्ड एट समथिंग. द सेकेंड पार्ट the second part has many questions here. The number one question is, why does Mrs. Bennet ask Jane to ride to Netherfields on horseback? What does this tell you about Mrs. Bennet's character? तो Mrs. Bennet मना करती है Jane को कोच में जाने के लिए, हॉर्स बैक पे भेजती है और ये उसका करेक्टर का क्या दिखाता है देखते हैं आंसर में. मिसेस बेनेट आस्क्स जेन टू राइड टू नेदरफील्ड्स इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय कैरेज बिकॉज शी हैज अ प्लान. उसने एक प्लान बना रखा था. शी होप्स जेन विल बी इन्वाइटेड to sleep the night there if it rains and she has gone on horseback because it won't be possible for her to return in the rain. क्योंकि उसका ये प्लान था कि वो बारिश तो आने ही वाली है, वेदर ऐसा था तो वो वहां जाएगी और बारिश की वजह से वापस नहीं आ पाएगी और उसे वहां रहने का टाइम मिलेगा. एंड दिस टेल्स अस दैट मिसेस बेनेट इज डिटरमाइंड टू गेट व्हाट शी वांट्स इवन इफ शी हैज टू रिजॉर्ट टू बीइंग डेवियस. है ना, तो वो जो चाहती थी, पाना चाहती थी, वो पा लेती थी. रिजॉर्ट टू बीइंग डेवियस मीन्स शी वाज क्लेवर. But she is not very honest here. She was very determined and she was very clever also. Question number 2. Elizabeth arrives at Netherfields. Why does Miss Bingley exclaim, "Oh my!" So when Elizabeth arrives at Netherfields, Miss Bingley exclaims, वो बोलती है ना oh my, से शॉक में बोलती है because she is covered with mud. एलिजाबेथ पूरी मिट्टी से भरी हुई होती है, उसके पैर वगैरह सब, उसकी ड्रेस. एंड हर हेयर इज डिसहेवल्ड और उसके हेयर जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा अनटाइडी दिख रहे हैं. दे आर डिसहेवल्ड मीन्स वेरी अनटाइडी. तो क्योंकि बारिश थी, कीचड़ था, वो पैदल आती है तो इस वजह से वो काफी ज्यादा उसके कपड़े गंदे हो गए हैं. शी इज कवर्ड विद मड एंड हर हेयर इज डिसहेवल्ड मीन्स वेरी अनटाइडी. Question number 3. Why does Elizabeth dislike Mr. Bingley's sister? वो उसे क्यों पसंद नहीं करती? Elizabeth dislikes Mr. Bingley's sister because they are indifferent to Jane when she is not around. ठीक है, तो they were very indifferent to Jane. जब वो वहाँ नहीं होती तो उसके बारे में से बातें करते हैं. So question. What is your impression of Mr. Darcy? And choose any two adjectives to describe his character and explain why you think so. So Mr. Darcy seems to be demanding in his expectations. उसकी बड़ी expectations थी women के साथ of what a woman should be like. वो कैसी होनी चाहिए. He is prejudiced against less fortunate people. As can be seen from his comment, क्योंकि गरीबों के प्रति उसका कुछ अच्छा बिहेवियर नहीं था. That the Bennet sisters cannot find good husbands because of their lack of money. वो उसकी ऐसी सोच थी कि उनके पास पैसे नहीं है, पैसों की कमी की वजह से उन्हें अच्छे हस्बैंड्स नहीं मिल रहे. एंड ही ऑल्सो थिंक्स दैट decorum is an important quality for women to have and is firm in his beliefs. जो सोचता था उसमें वो बहुत ही ज्यादा
फर्म था और वो चाहता था कि वो जो वुमेन्स की जो इम्पोर्टेंट क्वालिटी वो क्या है, दैट इज डेकोरम, दैट मीन्स पोलाइट बिहेवियर. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. Towards the end of the comic, Elizabeth says, I am no longer surprised at your knowing only 6 accomplished women. I rather wonder at your knowing any. What does Elizabeth mean by this remark? Why do you think the last 2 words in the sentence are written in bold? Elizabeth means that Mr. Darcy's expectations of women's accomplishments are too high. कुछ ज़्यादा ही सोचता था. And that no woman can rise to such standards. है ना, हर किसी में सब कुछ तो नहीं होता. And the last 2 words are written in bold to show that Elizabeth is being sarcastic. She is being sarcastic. Short note on the portrayal of women character in the comic you just read. So Mrs. Bennet and Mr. Bingley's sisters are portrayed in a stereotypical way that is not usually seen in real life. थोड़े stereotypical थे, मतलब वो ऐसा believe करते थे unfairly that all people or things with a particular characters are the same. ऐसा तो नहीं होता कि कोई एक ऐसा है तो पूरा ही उसका ग्रुप वैसा समझा जाए, है ना. तो वैसे stereotypes टाइप के थे and way that is not usually seen in real life. Also the relationship between the Bennet sisters is real and beautiful. So we are going to start with think and answer questions. Let's see. Question number 1. Were at Elizabeth Place, would you have gone and joined Jane where she had fallen ill? Why? क्या आप उसकी जगह होते, एलिजाबेथ की जगह, तो आप भी ऐसा ही करते. As Jane's sister, if I knew that my sister has had to sleep at a neighbor's home because of the weather and her health, I too would have rushed over like Elizabeth. तो आप भी ऐसा ही करते. Question number 2. Who, according to you, is the protagonist in the comic you just read and give reason for your answer. So यहाँ पर protagonist कौन है? यहाँ पर है Elizabeth. Even though the story begins with Jane's journey and little adventure, है ना, ऐसा तो story जो थी वो Jane पे ज़्यादा focus लग रही थी, लेकिन at the end क्या हुआ? Elizabeth becomes a protagonist. Protagonist means main character. Okay, main character जो है, Elizabeth turned out to be the main character in the story. Thank you so much. We end here with the question answers. अगर कोई भी आपके doubts हैं, you can ask me in the comment section. I'll surely reply to you. Thank you so much. If you like my channel, kindly share and subscribe. Thank you.